Hello students, welcome to my YouTube channel. So this is part 2 of our lecture series on differential equation. Those who are watching this video for first time, I request them to watch part 1 of this lecture series on differential equation. So today we are going to discuss how to find the solution of differential equation, right? तो solution of differential equation का कैसे find out किया जाता है, right? Okay. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, राइट? सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो. तो मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो इसका मतलब क्या है, आई नीड टू पुट सम वैल्यूज़ इन प्लेस ऑफ एक्स ताकि एक कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ज़ीरो मिले, राइट? तो अगर मैं कंसिडर करूँ एक्स इज़ इक्वल टू टू एज वेल एज फोर माइनस टू. अगर मैंने x के जगह पे 2 पुट किया दैट इज 4 माइनस फोर ज़ीरो. इफ आई पुट x इज इन प्लेस ऑफ x माइनस टू देन आई विल गेट माइनस टू स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस फोर विच इज इक्वल टू ज़ीरो. सो आई कॉल दैम, राइट, आई कॉल दिस टू एज सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट? तो सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने पुट किया x इज इक्वल टू माइनस फोर, राइट? अगर मैंने माइनस फोर पुट किया, राइट, तो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. एज वेल एज इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस वन आई विल गेट ज़ीरो वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि अगर मैंने एल एच एस कंसिडर किया, एल एच एस इज इक्वल टू माइनस फोर स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस फोर प्लस फोर, then this is equal to 16 minus 20 plus 4. 16 plus 4 is 20 minus 20 is equal to 0. So I can call x is equal to minus 4 as a solution of this particular equation. On similar basis we'll find out a solution of a differential equation. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर आपको दी रहेगी, राइट? जैसे कि यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको पूछा जाए कि भाई प्रूव करो कि यही इसका सॉल्यूशन है, राइट? तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, राइट? सो दे हैव आस्क्ड शो दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो मुझे उल्टा करना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट किया, तो अभी मुझे उल्टा करना है कि भाई ए दिया है और मुझे प्रूव करना है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, राइट? तो लेट अस स्टार्ट, राइट? कैसे इसको सॉल्व किया जाता है विल सी, राइट? सो सिंस गिवन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, राइट? तो आपको ऑब्जर्व करना है कि इक्वेशन क्या है. So if I see the equation, they have given dy by dx in this, right? तो मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो हमें सॉल्यूशन दिया है, राइट, इसका मुझे dy by dx फाइंड आउट करना है, राइट? सो फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so I will get this one as you know that whenever I differentiate y, so this is equal to 2y, I always multiply it by dy by dx, which is equal to a is a constant, a remains as it is, derivative of x square is 2x, right? So let me find out what is my dy by dx. So dy by dx क्या बनेगा? So dy by dx will be equal to, right, I will write down this one as a into 2x divided by 2y, right? 2 get cancels, remains is ax by y, right? तो ये मुझे dy by dx मिला. सो अभी मैं क्या करूँगा, ए dy by dx की वैल्यू मैं एक यहाँ पे पुट करूँगा, राइट? कैसे पुट करना है? सो लेट मी कंसिडर द LHS. सो व्हाट इज माय LHS? दैट इज x into dy by dx bracket square minus 2y into dy by dx, right? So let me write down dy by dx plus ax. So this is my LHS. Now let me substitute the values now, which is equal to x. What is my dy by dx is ax divided by y bracket square minus 2y into, so again dy by dx is ax by y plus ax, right? Now this is equal to
x. सो सिंस ए ब्रैकेट है तो हर किसी का स्क्वायर बनेगा, राइट. तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, राइट. तो ऐसे क्यों होता है? बिकॉज एज यू नो दैट if a upon so a into b divided by c bracket square I can write down this one as a square b square upon c square, right. Now y and y get cancelled, so remains is minus 2ax plus ax, right. Now you can see that minus 2ax plus ax, तो इस 2x में से ax अगर जाएगा तो बचेगा क्या? 1x. So you will get this is equal to, write down, which is equal to x. मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ. तो यहाँ पे होगा क्या, राइट. सो 2ax minus 2ax plus ax become ax and y square, यहाँ पे y square लिखा हुआ है, राइट. और एल्स लेट मी राइट डाउन वन मोर टाइम, यहाँ पे मैं लिखूँगा ताकि मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाए, राइट. सो यहाँ पे है x a square x square divided by y square minus 2ax plus ax. मैंने और एक बार स्टेप लिखी है ताकि आपको इजीली पता चले, राइट. नाउ दिस इज इक्वल टू x into a square x square as it is divided by. So since you can see that in our equation number 1, right, if I call this one as equation number 1, y square की वैल्यू कितनी दी है? ax square, right. So I will write down here y square as ax square. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ because y square is equal to ax square from equation number 1, right. Now 2 minus 2ax plus ax will become minus ax, right. तो यहाँ पे क्या होगा? 1a cancel, x square cancels, रिमेंस बचेगा क्या? a इंटू एक्स इज ax और यहाँ पे ax, तो बोथ विल गेट कैंसल्स, रिमेंस इज इक्वल टू 0 विच इज माई RHS, राइट. तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट. सो नेक्स्ट वन, show that y is equal to e raised to ax is a general solution of differential equation. Now there is one term that is a general solution. What do you mean by general solution? यहाँ पे solution two types के रहेंगे. One is general solution and one is a particular solution. अभी difference क्या है? अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ a लिखा तो a बनेगा जनरल सॉल्यूशन. अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के जगह पे सपोज एज इट इज़ मैंने 2 लिखा नहीं तो 3 लिखा तो वो बनेगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे हमें दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, राइट. अगर ए के जगह पे 1 है तो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अगर यहाँ पे सिर्फ ए अल्फ़ाबेट्स है, ए है, बी है, सी है, देन दैट विल बी योर जनरल सॉल्यूशन, राइट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. Okay, next, right. So I need to show that this is general solution of this, right. So again same thing, differentiate. With respect to x, I will get this one as dy by dx which is equal to e raised to ax. So as you know that this is ax है तो फिर से differentiation बनेगा of ax, right. So which is equal to e raised to ax and differentiation of ax, constant variable, constant remains as it is, derivative of x is 1, right. So which is equal to e raised to ax into a. So this is your value of dy by dx, right. Now let me again consider the LHS. LHS is equal to x into dy by dx which is equal to x
right, into what is dy by dx, e raised to ax into a. Now let me consider the RHS. So RHS is equal to, right, y into log of y, which is equal to, so y as it is, right, so y is equal to e raised to ax. So this is from equation number 1, and this log y, in place of y I will put again e raised to ax, right. So which is equal to, अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बिकॉज y is equal to e raised to ax. Now this is equal to, right, e raised to ax. I will write down this one as, so as you know that base दिया नहीं है तो I know always base e रहेगा, right. तो I will write down this one as a into x into log of e to the base e. मैंने ऐसे क्यों लिखा है, बिकॉज आई नो फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्मूला log of a raised to m can be written as m log a, right. So this is the thing that I will use, right. Now this is equal to, right, e raised to ax remains is a into x, log of e to the base e is always 1. Why? Because log of a to any base, अगर base और a value same है, then it is equal to 1. So which is equal to e raised to ax into ax. So this is my RHS. So if I see the LHS, x a e raised to ax, x a e raised to x, both are same. So I will say that therefore LHS is equal to RHS, right. So this is how we need to show that this is general solution of differential equation, right. तो अभी ये दो एग्जांपल्स हमने देखे हैं. दिस इज़ टाइप 1 काइंड ऑफ एग्जांपल्स, जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज इन LHS एंड नीड टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू RHS, राइट. तो इस तरीके से हम टाइप 1 सॉल्व करेंगे. बट टाइप 2 में जो भी आपको सोल्यूशन दिया रहेगा उसको डायरेक्टली अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, आई विल डायरेक्टली गेट दैट पर्टिकुलर आंसर, राइट. तो यहाँ पे आपको LHS और RHS में वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट. विल सी सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स नाउ. So example is given like this: verify that y is equal to log x is the solution of differential equation this, right. So what do you need to do, right. So this is given, directly differentiate this one, right. First observe करो कि solution किसका दिया है, equation किसका दिया है, right. x into d square y by dx square dy by dx है. तो यहाँ पे मुझे दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. आई नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस फॉर 2 टाइम्स. वाई? बिकॉज यह गिवन इक्वेशन, राइट, जिस इक्वेशन में उन्होंने दिया है वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी है एंड देयर इज़ अ सेकेंड डेरिवेटिव आल्सो. सो आई नीड टू सॉल्व फॉर अप टू सेकेंड डेरिवेटिव. सो डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू dy by dx is equal to log x, derivative is 1 by x, right. Next I need to find out the second derivative. Why? Because the requirement of equation is up to second derivative. So I will find out the second derivative, but यहाँ पे थोड़ा हम changes करेंगे. What I will do, I will bring this x to this side. So x को यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, right. So this will become x into dy by dx is equal to 1, right. Now I will differentiating with respect to x again. So x both are variable, u into v formula आपको अप्लाई करना पड़ेगा. So what is my u into v formula? First term as it is, second term का derivative of first derivative will be a second derivative. So this will become d square y by dx square plus second term as it is dy by dx into derivative of x is 1, which is equal to 0. तो मे बी स्टूडेंट आज सर वाई आपने यहाँ पे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया. बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करो, यू मे नॉट गेट दैट पर्टिकुलर आंसर,
ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे लेंदी स्टेप्स करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट just do this adjustment and you can solve, you will get the direct answer, right? So what remains? X into d square y by dx square plus dy by dx is equal to 0 is your final answer, right? So in this way we find out the solution of a differential equation, right? Is it clear? अभी बाकी के examples भी इसी तरीके से हमें करने, right? We'll see the next one. Verify that is a solution of differential equation, right? Sorry, यहाँ पे differential equation लिखा नहीं मैंने, so let me write down. Okay, right, so this is your differential equation. 1 minus x square d square y by dx square minus x into dy by dx minus m square y is equal to 0, right? So let us prove that this is a solution of this differential equation, right? So since you can see that in the equation they are given up to highest second derivative, right? Second order derivative. So I need to differentiate this for 2 times, means up to second order derivative, right? So differentiate this with respect to x, differentiating with respect to x, so I will get this one as dy by dx is equal to e raised to m sine inverse x. So since this is the not a normal formula of e raised to x, so again I need to use the chain rule into derivative of m sine inverse x. So if I simplify, I will get this one as e raised to m sine inverse of x into constant m as it is, and derivative of sine inverse x is 1 upon square root of 1 minus x square. So this is your dy by dx, which I will write down as m into e raised to sine inverse x divided by square root of 1 minus x square, right? So this is what dy by dx. Now next let me find out the second derivative, but before that I will again do the adjustment. I will bring this denominator to this side, right? So this will become 1 minus square root of 1 minus x square dy by dx is equal to m into e raised to sine inverse of x, right? Sorry, this is e raised to m sine inverse x, e raised to m sine inverse x, right? So again you need to differentiate this. So if I differentiate that one, so let me write down one more time, that is, it is square root of 1 minus x square dy by dx is equal to m into e raised to m sine inverse x. I have written this one more time, okay? So let me differentiate this again. So I will say differentiating with respect to x again, okay? So this is u into v again, 1 minus x square derivative of dy by d means second derivative, that is d square y by dx square plus second term as it is dy by dx into derivative of square root of 1 minus x square, 1 minus x square, right? So since this is the not a normal formula, again you need to apply the chain rule. So derivative of square root of x is 1 upon 2 square root of 1 minus x square into derivative of 1 minus x square. This is equal to m constant as it is, derivative of this is e raised to m sine inverse x into, again chain rule, m I will write down directly now, m into 1 divided by square root of 1 minus x square. You need to apply the chain rule here, right? So if I do so, I will get this one again, right? Okay, so next what I will do, right? So let me write down for neatly. This is square root of 1 minus x square into d square y by dx square plus dy by dx.
So you can see that derivative of 1 is 0 and derivative of this is minus x square is minus 2x divided by 2 square root of 1 minus x square, which is equal to m into e raised to m sine inverse of x into m divided by square root of 1 minus x square. Right, now next what I will do, I will bring this denominator to this side, right? So that means I am multiplying this denominator to both terms. That means it will look like this: square root of 1 minus x square into bracket square root of 1 minus x square d square y by dx square. This minus and this plus will become minus, right? This is dy by dx. This is this 2 and this 2 get cancels, remains is x divided by square root of 1 minus x square, which is equal to m into e raised to m sine inverse of x. So this m and this m I will write down as m square, right, divided by, right, we have, sorry, this division I have taken to this side. Okay, next, so multiply this square root of 1 minus x square inside to this term and again to this term. This square root get cancels, remains is 1 minus x square. ऐसे क्यों किया है? Because as you know that यहाँ पे, okay, so I will write down here, because as you know that square root of a into square root of a is equal to a. Okay, so next, so what remains? D square y by dx square minus, now just see, I'm multiplying this term to this term, right? यहाँ पे मैं second part को multiply करूँगा, but a term और a term दोनों same रहेंगे, so that means it will get cancelled, right? Remains is x into dy by dx, which is equal to m square, right, into e raised to m sine inverse of x, right? But if I see, this one, y is equal to, so what is value of y? Y value is e raised to m into sine inverse of x. So what I will do, I will write down, so I will write down this value as y, because from equation number 1 y value is e raised to m sine inverse of x, right? Now last term, that is 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx minus m square y is equal to 0, right? So this is the proof, right? तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है. Is it clear? Now the remaining questions will be like this. इसी तरीके से आपको questions सॉल्व करने हैं, राइट? कुछ लेंदियर क्वेश्चंस रहेंगे. इफ़ दे आर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क फॉर 6 मार्क्स, राइट? 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट? नहीं तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे दे विल आस्क फॉर 3 मार्क्स, राइट? ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन. Verify that is a solution of differential equation. Again the same thing, given y is equal to sine of log x, right? See the equation, दो बार differentiate किया है, second order derivative है, that means I need to differentiate up to second order derivative, right? So this is differentiating with respect to x, dy by dx, which is equal to साइन ऑफ लॉग एक्स. अगेन चेन रूल, आई एम कंपेयरिंग दिस विथ साइन एक्स. सो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, राइट? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स. टेक दिस एक्स टू दिस साइड, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x, right? Again differentiate,
differentiating with respect to x. I will get this one as chain rule, not chain rule, product rule, u into v. X into derivative of dy by dx, again d square y by dx square, dy by dx remains same, into derivative of x is 1, which is equal to cos is minus sine of log x into derivative of log x is 1 by x, right? Okay, so this is x into d square y by dx square plus dy by dx, which is equal to, if I see this one, right? So what is value of this from equation number 1? Value is y, so I will write down this one as minus y divided by x, right? Now I will take this x to this side again, so this is x into, we have x into d square y by dx square plus dy by dx is equal to minus y, right? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फिर से, राइट, आई विल राइट डाउन हियर इटसेल्फ, x into x will be your x square, this multiply by this x square, so this remains is d square y by dx square, again multiply to second term, x into dy by dx, take this minus y to this side, so this will become plus y, which is equal to 0. Okay, plus y which is equal to 0. Is it clear कैसे किया है मैंने, राइट? यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई किया है, एंड अगेन मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है. दिस माइनस वाई अगर मैंने इस साइड में लिया, राइट, तो ये बन जाएगा प्लस वाई, राइट? सो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. इज इट क्लियर? ओके, विल सी द नेक्स्ट वन. Okay, right, next one says verify that y is equal to cos x is a solution of this differential equation. So as usual, this is given y is equal to cos x. As you can see that in the equation they have given up to second derivative, तो हमें इसको second derivative तक solve करना है, right? तो same procedure, differentiating with respect to x, तो ये बनेगा dy by dx which is equal to derivative of cos x is minus sin x. Let me differentiate one more time, differentiating with respect to x, so this will become d square y by dx square, which is equal to minus, as it is, derivative of sin x is cos x, but as I know from, if I call this one as equation number 1, I will write down this one as d square y by dx square is equal to minus y, which can be written as d square y by dx square minus y, अगर इस साइड में आएगा, so that will become plus y, which is equal to 0, right? सिंपल क्वेश्चन है. तो सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट y is equal to is a solution of this differential equation. तो a मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, राइट? तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन, और अगर आंसर आपको नहीं आ रहा है सो जस्ट कमेंट करो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा. इज इट क्लियर? ओके, सो दिस टेक दिस वन एज अ होमवर्क. ओके, नेक्स्ट वन, अगेन द सेम थिंग, शो दैट is a solution of differential equation. Approach हर एग्जाम्पल में सेम रहेगा, जस्ट ट्राई टू डिफ्रेंशिएट द टाइप 1 एंड टाइप 2, राइट? टाइप 2 में अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, राइट, तो आई विल जस्ट शो यू. ओके, तो टाइप 2 में हमने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा, तो ये जो 1/x जो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, उसे हमने इस साइड में लिया, LHS में लिया, और उसको हमने सॉल्व किया, राइट? तो सिर्फ यही चीज़ आपको याद रखनी है इन टाइप 2. फॉर टाइप 1 LHS RHS वो तो ईजी पार्ट रहेगा, राइट? ओके, सो विल हैव द सेम अप्रोच फॉर सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट? सो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, this is your dy by dx, which is equal to a as it is,
डेरिवेटिव ऑफ साइन एम एक्स, राइट। चेन रूल यहाँ पे फिर से यूज़ करनी है, राइट। सो हमारा चेन रूल, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या बनेगा, कॉस ऑफ एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स क्या बनेगा, एम बनेगा। सो राइट डाउन हियर इंटू एम, राइट, प्लस b इंटू b इज अ कांस्टेंट, अगेन चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या बनेगा, माइनस साइन एम एक्स इंटू एम, राइट। सो दिस इज dy by dx, right? So let me write down, which is equal to a into cos of mx into m, so this is minus plus minus b into sine of mx into m, right? Okay, next, again differentiating with respect to x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंस यहाँ पे डिनोमिनेटर कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो अगेन प्रोसीड फर्दर। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एंड दिस एम, राइट, एज इट इज रहेगा। सो आई विल राइट डाउन हियर इटसेल्फ ए एंड एम कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो देन डिफरेंशिएट कॉस ऑफ एम एक्स, तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ एम एक्स इंटू एम, माइनस बी एंड एम एज इट इज, बिकॉज ये दोनों कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या बनेगा, कॉस ऑफ एम एक्स इंटू एम, राइट। सो इफ आई सिंप्लीफाई फर्दर विच इज इक्वल टू एम इंटू एम, सो ये माइनस रहेगा, देन दिस विल बी a m square into sine m, so let me write down mx minus b m into m is m square, right? So this is cos of mx. So if I see what is common thing, I will take a minus common and m square common. तो अगर मैंने माइनस और m square कॉमन लिया है, so this will become a into साइन एम एक्स, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा बिकॉज आई हैव टेकन अ कॉमन, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बचेगा, सो b इंटू कॉस ऑफ एम एक्स विच इज इक्वल टू, इफ आई कॉल दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, राइट, तो इसकी वैल्यू बनेगी माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, राइट। सो दिस इज योर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, right? Now this is equal to, therefore d square y by dx square minus इस साइड में आएगा तो प्लस m square y which is equal to 0. So this is how we find out the solution of a differential equation. Okay, so in the next lecture we'll see formation of differential equation and after that a variable separable method, right? तो और एक 2-3 वीडियोस इसके ऊपर हम बनाएंगे, राइट। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है सो यू कैन कमेंट, राइट। और जिन लोगों को सच्ची में अच्छा लगा है यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you will get the update related to other lectures also. Thank you so much.